हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी आज देख के शौक हो गया कि एक बाइक से स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक बाइक है फ्रेंड्स। अब इससे पहले भी मैं देखा था कि पेट्रोल की बाइक थी, वो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक पुरानी भी हो चुकी थी। नई बाइक आई फ्रेंड्स, सेम दिखने में पूरा सेम है, लेकिन जो अपन दोनों में फ़र्क इतना है कि पुरानी जो इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर जो बाइक थी ना फ्रेंड्स, वो पेट्रोल की थी। जैसा पेट्रोल के दाम पर जैसा गेन होते जा रहे हैं, वैसे आपको देखने को मिल रहा है एक से एक इलेक्ट्रिक बाइक आते जा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और नए नए जो बाइक्स आते हैं फ्रेंड्स, उसके वीडियोस में सबसे पहले अपलोड करता हूँ डेली बेसिस। आप अगर मेरे वॉइस ओवर के संग आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट करिए एज ए सपोर्ट करिए। और देखिए फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इमेजिन अप टू 240 की एमएस रेंज, इतनी अच्छी बाइक है फ्रेंड्स। अब क्या बोलते हैं, हीरो मोटोक्रॉप recently announced its upcoming EV venture with a new brand name vida। इसका नाम एकदम न्यू, खाली क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जो अपन पुरानी जो इलेक्ट्रिक बाइक दूसरी तरह अटके और कैसे ये इसमें तो मॉडिफाइड करे फ्रेंड्स, और इसको पूरा बना दिए इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर दिए टोटल। दरअसल का इंजन के पास मॉडिफाइड दिखता होगा फ्रेंड्स आपको। इंजन के पास मॉडिफाइड करके उसको पूरा पेट्रोल से हटा के पूरा इलेक्ट्रिक बाइक कर दिया इसको। आप इसको चार्जिंग पे लगाओ और जितना आप बाइक चलाते चलो पकड़ में, खाली कभी तो भी आपको इसका रिपेयरिंग का खर्चा आपको इजी वे में उठा लेना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूंगा। टूडेज day and age in transition period from fossil fuel vehicles to battery power vehicles. This has resulted in multiple new products being launched in the electric vehicle EV space in India, especially in the two-wheeler segment. IC engine powered vehicle still form the majority of total vehicles on road. Switching to electric mechanics that look different will not be easy. Brand names like Activa, Splendor, etc., which are the best-selling two-wheeler of India, might get their own electric version. These vehicles have not become best sellers overnight. It has taken years. Manufacturers worldwide want their best selling brand to continue into the future with electric version. Automotive design Viniraj Somasankar has now created a render of Hero Splendor electric motorcycle. Vinay say the Hero Splendor is the most controversial motorcycle in the country. Paratus, its appearance is iconic and ageless. There is almost nothing random about its design. Every element feel meaningful and purposeful, and the corporation are support on. It's kind of like Maggi noodles if tomorrow they ship Maggi with 10% more garlic. The customer will be able to tell the difference and will probably not accept the new version. The Splendor is something like that. It can't be measured around with the Hero shifted to clear, less multi-reflector elegance in 2004, self-starter in 2010.
and the seat was slightly dented in 2020. That's it. Somebody or whoever. B. Inevitably must happen. Its splendor must go electric, but how? It is a thought process that has reality to be interesting. New render of electric splendor. Electric Vinay has managed to rent most of the signature design element from the petrol powered splendor bargaining. A few key and observe variation. For instance, engine and gearbox assembly has been replaced by a battery pack enclosed within a black hot casing. It gives attractive blue accents on at them, casing all a rim. Central panels are and rear fender, which create a nice contrast. The standard stainless steel grab rail is replaced by a single piece plastic grab rail borrowed from HF Diesel Deluxe. क्योंकि तो तेरा खाना नहीं खाया फ्रेंड्स के लिए मेरे को खाना खाने पड़ना है 2 बजे उठ के वो करा था उसके लिए बराबर वॉइस ओवर नहीं कर सकते हैं थोड़ा देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर मैं देख लीजिए गलती हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं बुरा उसका कभी नहीं मानता और नहीं कभी मानूंगा, क्यों बोले तो आपका चैनल है फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट करिए। आप जैसा बोले वैसा मैं वीडियोस बना के डालते रहूँगा। तो देखिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अच्छा डुलेक्स इस gears a slightly modified branding in the form of splendor, while the rear fender gets an urban tag. In a practical world, some key changes will have to be made to splendor structure. For example, the down tube changes will have to be it suggests. So that it can house a battery pack and mounting points for the motor. The tank would now comprise a charger, recurrent the suite master controller and other auxiliary electronic, while the side box will house a motor controller. Getting more into details, Splendor electric motorcycle Rinder will come with a fixed 4 kWh battery pack that feeds energy to a 9 kW midship mount electric motor, which drives the rear wheels using a slant belt drive. There is also space for a secondary 2 kWh battery pack, which called be a removable unit. In all probability, the additional battery pack increase the single charge range by up to 50%. The standard 4 kWh battery pack offers a range of 120 km on a single charge, while with an additional 6 kWh battery, this figure increases to 180 km. Charging port is accessible through the full tank. Unlike the
illustrator has also defined for different variants of splendor, including default, utility, range and range max with different configuration. As of now, Euro Motocorp has not announced any plans to launch Splendor Electric, but there are a few aftermarket solutions few a month ago. An EV conservation kit of Hero Splendor was launched by a then basis EV startup named gogoal. This was the first instance where an EV conservation kit for two-wheeler had been provided by an RTO. तो देखिए फ्रेंड्स, आप एक स्प्लेंडर बाइक आ चुकी है जिसे आप खरीद सकते हैं। इसका प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अब इसका प्राइस डिक्लेयर करे तो यहाँ पे आपको नज़र आता है, लेकिन मैं इसका देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका बता सकता हूँ। आप ये कब आने वाली है, मार्च 2021 में आने वाली थी। आपको मार्च 2021 कुछ 7:07 पर कुछ 250 बाइक है फ्रेंड्स। आप जाके इसी वे में आप परचेस कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक बार बता दूंगा फ्रेंड्स। क्या इसका प्राइस में ही आपको इधर बता दूंगा। इसका प्राइस देखा गया तो आपको लगभग पड़ेगा फ्रेंड्स, एक 40 से 45 हज़ार तक पड़ेगा फ्रेंड्स। आप जाके परचेस कर सकते हैं। हीरो स्प्लेंडर है, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, 40 से 45 लाख में नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा एक सेकेंड, 40-45 लाख में नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो मैं ऐसी हवा में बोल दिया था। और इसका जो इसका रेड कलर देखा गया तो बहुत बेहतरीन कलर का रेड कलर है फ्रेंड्स। बेसिस इंफॉर्मेशन में के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑन रोड प्राइस RS 1 लाख ऑनवर्ड्स, 1 लाख से 86,000 में आपको इजली वे में देखने को मिलेगा। ये बहुत बेहतरीन तरीके से कलर भी आप इसका देख सकते हैं फ्रेंड्स। रेड कलर में एकदम मस्त मौत गाड़ी दिख रही है, एकदम मस्त। क्या बोलो, रेंज आपको देखने को मिलेगा 160 km चार्ज। मोटर पावर आपको 4000 W का देखने को मिलेगा। यूजर रेटिंग अच्छी खासी है फ्रेंड्स, 4.0 यूजर रेटिंग है इसकी। आप जाके परचेस कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसी चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नए गाड़ियों के बारे में। मैं डेली बेसिस डालते रहता हूँ, नए बेसिस और डेली बेसिस मेरे पास गाड़ियों के इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। मैं जिसे कन्वर्ट करता हूँ, इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और क्या कहते हैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत आपको समझ में ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी मैं आपको 40 से 45 हज़ार बोलते हूँ। मैं ऐसे क्यों बोले तो आप इस जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना फ्रेंड्स, के प्राइस कितने चल रहे हैं राज्य में सेम जैसे समझ लो, लेकिन आपको देखने को मिलेगा इसका प्राइस है 1 लाख से 86,000 तक ऑन रोड देखने को मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय।